Hello, sir. Hello, sir. Sir, I think most of the people have joined the group.
Hello, sir. Sir. Hello, sir.
Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is network problem. Start. Visible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Is the screen visible? Yes, sir. So we are discussing solution of partial differential equation having variable coefficients. Before that, order and single points equations. An ordinary homogeneous differential equation with variable coefficients have ax Sir, by your d. voice is not audible properly. Is it audible now? Yes, sir. But your screen is not visible now. Nice. Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. An ordinary homogeneous differential equation with variable coefficients has the general form ax d square y by dx square plus bx dy by dx plus cx y is equal to 0. So this can be expressed as d square y by dx square plus px dy by dx plus qx y is equal to 0. Okay. If you divide the differential equation with ax, then you have d square y by dx square plus px dy by dx plus qx y is equal to 0. Where px is equal to bx by ax and qx is equal to cx by ax. So before proceeding for power series solution of this equation, it is necessary to know about the ordinary points and singular points of the differential equation d square y by dx square plus px dy by dx plus qx y is equal to 0. And the ordinary points and singular point of the differential equation depends on the behavior of the coefficient functions px and qx. So depending upon the nature of px and qx, you can say whether the point is an ordinary point or a singular point. So a point x is equal to x0 is an ordinary point of the differential equation if both the coefficient functions px and qx are analytic at x is equal to 0. So yesterday we are discussing analytic function. So if your px and qx are analytic at x is equal to 0, then it is called an ordinary point. On the other hand, if either px or qx or both fail to be analytic at x is equal to 0, the point x is equal to x0 is called the singular point of the differential equation. If x is equal to x0 is an ordinary point of the differential equation, then two linearly independent power series solution of the form yx is equal to summation n is equal to 0 to infinite n
x minus x0 to the power n can be obtained for the equation. The radius of convergence of each of the series solution is at least equal to the distance from x is equal to x0 to the nearest singular point of the equation. Am I clear? Yes, sir. Yes, Oh, sir. okay. So if Ax is equal to x0 is a singular point of a differential equation, that means either Px or Qx or both are not analytic at x is equal to 0, then x minus x0 Px and x minus x0 square Qx are analytic at x is equal to 0, then the point x is equal to x0 is called regular singular point. Px and Qx are not analytic. But if you multiply Px with x minus x0 and multiply Qx with x minus x0 square, and then these two terms are analytic, then it is called regular singular point or non-essential singular point of the equation. That means by multiplying a factor, you can make the function in such a form that you can have the solution like an ordinary point. So, the usual power series solution in form given as yx is equal to summation n is equal to 0 to infinity n x minus x0 is equal to n is not possible if x is equal to x0 is a regular singular point. However, the equation has at least one solution in the form of an extended power series given by yx is equal to x to the power k summation n is equal to 0 to infinity n x minus x0 to the power n. Are you getting it? So this is called extended power series. This is the product of a power series summation n is equal to 0 to infinity n x minus x0 to the power n and a given power of x is x to the power k, in which the exponent k may be a fraction, a negative integer or a real irrational number. Such a series is also called a quasi-power series or Frobenius series. So, let us now discuss the solution of a power series, then we shall discuss solution of a Frobenius series or extended power series or quasi-power series. The method of obtaining solution about a regular singular point is called Frobenius method of solution of differential equation after Ferdinand Georg Frobenius, a German mathematician. The Frobenius series evidently include the power series as a special case. So, power series is a special case of Frobenius series or quasi-power series or extended power series. Then let us discuss what is a point at infinite. In order to know the behavior of a point at infinite as x tends to infinite, we proceed as follows. We set x is equal to 1 by z and change the variable in equation this equation, your d square y by dx square plus px dy by dx plus qx y is equal to 0. Then we can have change of variable from x to z. Now the behavior at x is equal to infinite is the same as the behavior at z is equal to 0. So your dy by dx is equal to dy by dz dot dz by dx, dy by dz multiplied by dz by dx, chain rule, is equal to minus 1 by x square dy by dz is equal to minus z square dy by dz. So you can write d by dx is equal to d by dz dy by dx multiplied by dz by dx. This is nothing but minus z square d by dz minus z square dy by dz. So you have minus z square minus 2z dy by dz minus z square d square y by dz square is equal to z to the power 4 d square y by dz square plus 2z cube dy by dz. Now substituting this, you can have z to the power 4 d square y by dz square plus 2z cube dy by dz plus p minus z square dy by dz plus qy is equal to 0. So your z to the power 4 d square y by dz square plus 2z cube minus z square p dy by dz plus qy is equal to 0. So your d square y by dz square plus 2z cube minus z square p by z to the power 4 dy by dz
plus q by z to the power 4 y is equal to 0. So you have your d square y by dz square plus p1z dy by dz plus q1zy is equal to 0. So if both the coefficient function p1, that is 2zq minus z square p by z fourth, is equal to 2z minus p by z square, and q1 is equal to q by z to the power 4 are analytic and z is equal to 0, then x is equal to infinite is an ordinary point. If either p1 or q1 or both fails to be analytic at z is equal to infinite, z is equal to 0, then x is equal to infinite is a regular singular point. At a singular point, z is equal to 0 or x is equal to infinite if your zp and z square q1, that is both 2zq minus z square p by zq, and q1 is equal to q by z square are analytic, then the point x is equal to infinite is a regular singular point. Otherwise, x is equal to infinite is an essential singular point. So in essential singular point, you can never convert it to an ordinary singular point by multiplying any factor. So there are some examples where you can determine the ordinary points, singular points, and nature of singularity of differential equations. Okay. Any question? Someone say something? Okay. So let us discuss to the actual part of our discussion, that power series solution about an ordinary point. If x is equal to 0 is an ordinary point of the differential equation y double dash plus px y dash plus qxy is equal to 0, then there exists a pair of linearly independent power series solution of the form y1, which is a function of x, is equal to n is equal to 0 to infinite n x to the power n, and y2, which is a function of x, is equal to summation n is equal to 0 to infinite bn x to the power n. So your radius of convergence of each series is at least equal to the distance of the nearest singular point of the equation from x is equal to 0. We illustrate the power series method of solution for the differential equation of a simple harmonic oscillator. So what is the equation of a simple harmonic oscillator, anybody? d square x by dt square plus omega square x is equal to 0, where omega is the frequency and t is the independent variable. Okay. So now you can have your standard form of this equation as d square x by dt square plus p dx by dt plus q x is equal to 0. Are you getting it? Anybody? Yes, sir. So that one have it. d square y by dx square plus p x dy by dx plus qx y is equal to 0, where y is a function of x. So in a linear harmonic oscillator, you can have the expression like this. d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. So this can be written as d square x by dt square plus pt dx by dt plus qt x is equal to 0, where qt is equal to omega square and pt is equal to 0. So then we will have to solve it. Okay.
So, am I audible? Yes, sir. So, your harmonic oscillator problem where d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 can be written in a power series form where pt is equal to 0 and qt is equal to omega square. Okay. So, your pt is equal to 0 and qt is equal to omega square. So, both are an ordinary point and possess two distinct power series. One is xt is equal to summation lambda is equal to 0 to infinite a lambda t to the power lambda. And if you differentiate it, then you will have your d square x by dt square is equal to summation lambda is equal to 0 to infinite a lambda lambda multiplied by lambda minus 1 t to the power lambda minus 2 is equal to summation lambda is equal to 2 to infinite a lambda lambda multiplied by lambda minus 1 t to the power lambda minus 2. Now substituting these equations, you can have your look here d square x by dt square, then your pt term is equal to 0, then your pt term is equal to 0, then so substituting d square x by dt square as summation lambda is equal to 2 to infinite a lambda lambda into lambda minus 1 t to the power lambda minus 2, then you will have your equation as summation lambda is equal to 0 to infinite lambda is equal to 2 to infinite a lambda 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 minus 1 t to the power lambda minus 1 plus omega square summation lambda is equal to 0 to infinite a lambda t to the power lambda is equal to 0. Are you getting it? Yes, sir. d square x by dt square का वैल्यू हम यहाँ डाल दिए pt dx dt इज इक्वल टू 0, उसको डालने की जरूरत नहीं. अब qt के जगह ओमेगा स्क्वायर डाल दिए और x के जगह ये जो है ए जीरो जब जीरो नहीं होगा एक्स टी इज इक्वल टू समेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 0 to infinite a lambda t to the power lambda term डाल दिए and the equation will be 0. Okay. Now you can shift the index. जब इंडेक्स हम शिफ्ट करते हैं क्या करते हैं, आपका समेशन में जो होगा बाकी वाले टर्म में उसका उल्टा होगा. ठीक है, अगर यहाँ घटेगा वहाँ विल इंक्रीज, अगर यहाँ हम इंक्रीज करेंगे देयर वी शैल डिक्रीज. So your lambda is equal to 2 to infinite a lambda into lambda minus 1 t to the power lambda minus 2 is equal to summation lambda is equal to 0 to infinite a lambda plus 2 multiplied by lambda plus 2 multiplied by lambda plus 1 t to the power lambda. Okay. So now your original equation will become lambda is equal to 0 to infinite. Okay, यहाँ देखो lambda 2 था, अब lambda 0 हो गया, we decrease it by 2. वहाँ a lambda minus 1 था, a lambda की जगह lambda प्लस 2 हो गया, लैम्बडा की जगह लैम्बडा प्लस 2 हो गया, लैम्बडा माइनस 1 की जगह लैम्बडा माइनस 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 हो गया, टी टू द पावर लैम्बडा माइनस 2 की जगह टी टू द पावर लैम्बडा माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया. दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स व्हिच आई वाज डिस्कसिंग यस्टरडे. सो नाउ हियर योर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 to infinite एंड योर ओमेगा स्क्वायर टर्म का साथ जो है लैम्बडा इज इक्वल टू 0 to infinite. सो यू कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू 0 to infinite a lambda plus 2 multiplied by lambda plus 2 multiplied by lambda plus 1 plus omega square a lambda whole multiplied by t to the power lambda is equal to 0. So this is valid for all values of t. So your a lambda plus 2 multiplied by lambda plus 2 into lambda plus 1 plus omega square a lambda is equal to 0. So you can write a lambda plus 2 is equal to minus omega square by lambda plus 1 into lambda plus 2 a lambda. And this is called the recursion formula. It is called recursion formula, and by using it you can evaluate an in terms of a0. For lambda is equal to 0, you have a2 is equal to minus omega square by 2 factorial a0. For lambda is equal to 1, you have a3 is equal to minus omega square a1 by 2 multiplied by 3 is equal to minus omega square by 3 factorial a1. Similarly, when lambda is equal to 2, you have a4 is equal to minus omega square by 3 multiplied by 4 into a2. That is nothing but omega to the power 4 by 4 factorial a0. Okay. a2 के जगह हम minus omega square by 2 factorial a0 हर जगह डाल रहे हैं. Similarly, you have the other terms.
The even coefficients are obtained in terms of A0 and the odd coefficients are obtained in terms of A1. Okay. So your xt is equal to A0 plus A1t plus A2t square plus A3tq plus A4t4 plus A5t5 plus A6 t to the power 6, so on and so forth. So you can write A0 multiplied by 1 plus A2 by A0 t square plus A4 by A0 t to the power 4 plus A6 by A0 t to the power 6 plus so on and so forth. Plus A1, 1 plus A3 by A1 tq, so on and so forth. So your xt is equal to A1 cosine of omega t plus A2 sine of omega t, because your 1 plus omega t square by 2 factorial plus omega t to the power 4 by 4 factorial minus so on and so forth is nothing but cos omega t. And the series omega plus minus omega t q by 3 factorial plus omega t to the power 5 by 5 factorial is nothing but sine omega t. This is the series expansion. So your A1 is equal to A0 and A2 is equal to A1 by omega. These are the two linearly independent solutions. So if we write A1 is equal to A sin theta and A2 is equal to A cos theta, then xt is equal to x, which is a function of t, is equal to A sin omega 0 t plus theta. This is the solution of the linear harmonic oscillator A, where A is equal to root over of A1 square plus A2 square, which is nothing but root over of A0 square plus A1 square by omega square plus theta, and your theta is equal to, the angle theta is equal to tan inverse A1 by A2 or tan inverse A0 omega by A1. The cosine and sine series of the equation are known functions which converge for all values of x. In general, one has to check the convergence of the series before declaring it as a valid solution. Am I audible? Yes, sir. Okay. So let us have some other example. Y double dash plus x y dash plus y is equal to 0. Now, your this can be written as y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to 0. Where your px is equal to x and qx is equal to 1. Okay. So this can be written as yx is equal to summation n is equal to 0 to infinite an x to the power n. This is assumed to solve a power series solution in general. So where the coefficients have to be determined. So you have to यहाँ दोनों टर्म है, y डबल डैश है, y डैश है और y है. y डैश का कोफिशिएंट x है और y का कोफिशिएंट 1 है. Now you have to evaluate both y dash and y double dash. Your y is equal to summation n is equal to 0 to infinite n x to the power n. Similarly, you can evaluate y dash is equal to summation n is equal to 0 to infinite n into n minus 1 n x to the power n minus 2. Similarly, you can evaluate your y double dash. So what is the value of y double dash? Y double dash is equal to n is equal to 2 to infinite n into n minus 1 n x to the power n minus 2. And y dash is equal to n is equal to 0 to infinite n x to the power n minus 1. Now substitute this in your equation and you will get summation n is equal to 0 to infinite n into n minus 1 n x to the power n minus 2 plus summation n is equal to 1 to infinite n x to the power n plus summation n is equal to 0 to infinite n x to the power n is equal to 0. In the first summation, in order to make the general term x to the power n, we will increase the summation index by 2. अब n is equal to 2 एक जगह है, n is equal to 1 एक जगह है, n is equal to 0 एक जगह है, n is equal to 2 to infinite, n is equal to 1 to infinite, n is equal to 0 to infinite. Now you have to shift the summation and make all of these having your n is equal to 0 to infinite. So the first term will become n is equal to 0 to infinite n plus 2 multiplied by n plus 1 a n plus 2 x to the power n.
The second term will become n is equal to 0 to infinite n x to the power n. So now put these things and make your summation n is equal to 0 to infinite. So you will have your n is equal to 0 to infinite, summation n is equal to 0 to infinite, n plus 2 multiplied by n plus 1, a n plus 2 plus n plus n whole multiplied by x power n is equal to 0. Now the coefficient of each power of x must vanish individually. So you have the first term n plus 2 into n plus 1, a n plus 2 plus a n minus 1, a n is equal to 0. So your a n plus 2 is equal to minus n by x n minus 2, n plus 2, minus n by n plus 2. This two-term recursion relation is used for determination of the coefficients a n. The even coefficients a2, a4, a6 can be obtained in terms of a0, and the odd coefficients a3, a5, a7, so on and so forth are obtained in terms of a1. Okay. So the general even coefficient is a2n is equal to minus 1 to the power n, a0 by 2 multiplied by 4, so on and so forth, the 2n, and the odd coefficient can be written as a2n plus 1 is equal to minus 1 to the power n, a1 by 3 multiplied by 5 multiplied by 7, so on and so forth, 2n plus 1. Using these values of the coefficients, we can have our expression yx is equal to a0 plus a2x square plus a4x to the power 4 plus so on and so forth, a2n x to the power 2n plus the odd terms a1x plus a3x cube plus a5x to the power 5 plus so on and so forth, a2n plus 1x to the power 2n plus 1. So there are two terms. So this can be written as y1x plus y2x. These two series solutions, y1x and y2x, are linearly independent. The radius of convergence R1 and R2 of the two series y1 and y2 are, your R1 is equal to limit n tends to infinite modulus of an by an plus 1 modulus. Yesterday we have discussed it. This is nothing but infinite. And your R2 is equal to also limit n is equal to infinite, limit n tends to infinite modulus of an by modulus of an plus 1, that is nothing but infinite. So both series convergence for all values of x. There are three conditions we have discussed yesterday. One is r is equal to 0, one is r is equal to infinite, one is r between some minus r to r, x is between some minus r to r. So here r is equal to infinite. So in all the terms in the vicinity of that point, it will converge. Okay. So this is the power series. This is the basic concept to understand your solutions, partial differential equation having variable coefficients. So if Dr. Nayak will not join, then we shall discuss today the Frobenius series method, which is also very important. That is quasi-power series or extended power series. Okay. Or if you want that I shall continue to my class only, then we shall have our class tomorrow. Anybody? Sir, अगर डॉक्टर ना हाँ sir, we want to ask something. Sir, can you explain all the mathematical equation? yes, Because by you can reading we have cannot understand. you can have your देखिए यूजर ने क्या किया जो पावर ले रहे हैं Sir, your voice is not audible properly. Am I audible? Yes, sir. So देखिए अब पावर सीरीज में हमारा दो कोफिशिएंट है. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Yes, sir. पावर सीरीज में देखिए दो कोफिशिएंट है. वाई डैश का कोफिशिएंट है पी एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट है क्यू एक्स. एक्स डैश का कोफिशिएंट है पी एक्स एंड एक्स का कोफिशिएंट है क्यू एक्स एंड योर वाई डबल डैश और एक्स डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है. सो हम क्या करते हैं जब उसको पावर सीरीज में हम सॉल्व करते हैं, सो वी टेक वाई इज इक्वल टू समेशन एनीबॉडी, वाई इज इक्वल टू
क्या है, समेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए लैम्बडा टी टू द पावर लैम्बडा। ओके, अगर एक्स होगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए एन एक्स टू द पावर एन। अगर टी होगा समेशन टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए टी एक्स टू द पावर टी। आर यू गेटिंग इट? एक समेशन Yes, टर्म sir. रहेगा जहां आपका लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। एंड जो अंदर वाला टर्म, उसके बाद वाला टर्म जो है वो आपका एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, जो आपका इक्वेशन में है डिनोमिनेटर में उसके मुताबिक वो होगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग अबाउट ए एन एक्स टू द पावर एन, और इफ देयर आर टू सीरीज बी एन एक्स टू द पावर एन, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? एक समेशन टर्म रहेगा, ओके, पावर सीरीज का जनरल सॉल्यूशन जो है, देयर विल बी ए समेशन टर्म, देन योर ए सबस्क्रिप्ट लैम्बडा एक्स टू द पावर लैम्बडा और टी टू द पावर लैम्बडा, इस तरह से टर्म आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन हमने लिया लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए लैम्बडा टी टू द पावर लैम्बडा, उसको हम क्या करेंगे, अब एक्स डैश अगर लेंगे और एक्स डबल डैश लेंगे तब जाकर हमें सॉल्यूशन आएगा। तब एक्स डैश कैसे करेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट इट। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका टी टू द ए लैम्बडा जो है दैट इज ए कांस्टेंट, टी टू द पावर लैम्बडा क्या होगा, टी टू द पावर लैम्बडा को जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, वो आएगा क्या आपका, एनीबॉडी? टी टू द पावर लैम्बडा क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या है, n into x to एन the power n minus 1. एन माइनस वन। सो इसलिए टी टू द पावर एन जो है, टी टू द पावर लैम्बडा उसका क्या होगा, लैम्बडा टी टू द पावर लैम्बडा माइनस वन। आर यू गेटिंग इट? दैट इज योर Yes, एक्स sir. डैश, Yes, sir. दैट इज एक्स डैश। एक्स डबल डैश क्या होगा, लैम्बडा एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देखेंगे टी टू द पावर लैम्बडा माइनस वन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर लैम्बडा माइनस वन, लैम्बडा माइनस वन टी टू द पावर लैम्बडा माइनस वन टी टू द पावर लैम्बडा माइनस टू, ठीक है। अब ये Yes, sir. दोनों टर्म जो है एक्स डबल डैश एक्स डैश, इन दोनों को और एक्स, इनको आप अपना ओरिजिनल इक्वेशन में डालो और बाकी जो कोफिशिएंट है उसको रहने दो। जैसे आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओमेगा स्क्वायर हमने रहने दिया, बाकी एक्स का वैल्यू डाला ए लैम्बडा टी टू द पावर लैम्बडा, और एक्स डबल डैश का वैल्यू डाला लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस वन टी टू द पावर लैम्बडा माइनस टू, ठीक है। अब इसमें और एक समस्या है, अब हर एक का समेशन 0 से इन्फिनिट नहीं है। अगर हर एक का समेशन 0 से इन्फिनिट होगा देन वी कैन जस्ट इक्वेट इट, जहां नहीं है देन चेंज द समेशन। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिट है, अब लैम्बडा 0 टू इन्फिनिट करेंगे और अंदर जहां लैम्बडा है वहां लैम्बडा माइनस टू कर देंगे, जहां लैम्बडा प्लस टू है लैम्बडा रखेंगे, लैम्बडा प्लस वन है लैम्बडा माइनस वन होगा। आपका समेशन में जो होगा इंक्रीज होगा तो बाकी टर्म में डिक्रीज होगा, समेशन में डिक्रीज होगा तो बाकी टर्म में उतना टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ समेशन कर दिया, देन उसको इक्वेट कर दो, जो कोफिशिएंट है वो 0 आ जाएगा एंड यू विल हैव योर रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। लैम्बडा 0, पहले ए 0 लेना, तो जहां जहां लैम्बडा है वहां 0 पुट कर दो। ए 1 लेना, जहां जहां लैम्बडा है वहां 1 कर दो। लैम्बडा 2 लेना, जहां जहां लैम्बडा है वहां 2 कर दो। फिर हम क्या कर रहे हैं, जितना ऑड टर्म है उसको ए 0 के मल्टीप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। और जितना इवन टर्म है ए 0 से और जितना ऑड टर्म है ए 1 से दिखाएंगे। अब ए 3 जो है वहाँ एक ए 1 टर्म आएगा, बाकी कुछ आएगा। ए 5 जो है वहाँ एक ए 1 टर्म आएगा, बाकी कुछ कोफिशिएंट्स आएगा। ए 7 जो Yes, है sir. एक ए 1 टर्म आएगा, बाकी टर्म आएगा। इस तरह से और टर्म जो है ए 2 में ए 0 आएगा, बाकी कुछ आएगा। ए 4 में ए 0 आएगा, बाकी कुछ टर्म आएगा। हो गया आपका सोल्यूशन। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज Yes, द sir. बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए पावर सीरीज। हम इसको ए लैम्बडा टी टू द पावर लैम्बडा और एक्स टू द पावर लैम्बडा इस तरह या वाई टू द पावर लैम्बडा इस एक्सप्रेशन में लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। जहां आपका कोफिशिएंट 0 हो गया पी एक्स या क्यू एक्स, वहां वो वाला रखने की जरूरत नहीं। अगर आपका हर एक टर्म है देन यू जस्ट evaluate your first derivative and second derivative simply, then put it, change the summation, have your recurrence relation and have the solution. Any doubt? No, No, sir. sir. Okay, when you will have some examples you will better understand. So इसलिए मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको आज दिखाया
You can have also try it at your home. Sir, can you send some important question related to exam so that we can prepare that? Because एग्जाम in के लिए देखिए distance मैं course it's आपको very ये difficult to find सुनिए out those सुनिए सुनिए questions. सुनिए सुनिए सुनिए, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स. वन इज मैं आपको बता दूं क्या एग्जाम में आएगा, विच इज इम्पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर एनीबडी हैविंग Or some, only provide दिस some ऑल्सो. questions. सेकेंड Even you cannot find the अगर सुनिए questions सुनिए also. सुनिए 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 दूसरा, लेट मी कंप्लीट. एक चीज है कि मैं आपको बता दूं, प्रोबेबल मतलब मुझे पता है ना, मैं आपको घुमा फिरा कर वही बता दूंगा. और प्रोबेबल क्या होता है, हर चीज प्रोबेबल है. और बाकी इन जनरल पिछले साल जो नहीं आया है यूजुअली वही आता है, तो पिछले साल को छोड़ के बाकी जितना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो. तो दैट इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन. सेकेंड चीज क्या है, आपका अगर बेसल से आपका जितना है सोल्यूशन आपके किताब में सब बेसल से फॉर्माइट है, लीजेंडर है, जितना आपका सिलेबस में, हर एक को हम पावर सीरीज और फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल कोएफिशिएंट. और आप जब देखेंगे चारों पांच जितना भी आपका कोर्स में सब इसी फॉर्मेट में आएगा, पावर सीरीज फॉर्मेट में और ज्यादा से ज्यादा फ्रोबेनियस फॉर्मेट में. अगर एक्सटेंडेड पावर सीरीज हम यूज करेंगे तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. अगर इसको आप बढ़िया से समझ गए तो यू कैन सॉल्व ऑल द 5. तो एक यूनिट आपका कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? अब बेसल में मैं Yes, आपको sir. एक से लास्ट तक बताऊंगा. और आपका बेसल वगैरह है, आपका कहाँ पावर सीरीज फ्रोबेनियस मेथड बताया गया है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कहाँ पावर सीरीज फ्रोबेनियस मेथड आपका दिखाया गया है. नहीं है, आप देख लीजिए आपका मटेरियल में, तो सीधा बेसल पे आ गए. तो आप बेसल को अलग बेसल, यू विल सॉल्व बेसल डिफरेंटली, यू विल सॉल्व हर्माइट डिफरेंटली, यू विल सॉल्व एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंटली. But I am trying to explain you how you can solve any type of differential equation having variable coefficient, partial differential equation having variable coefficient with a common method. So now you will enjoy it. और अगर कोई दूसरा भी आ जाएगा कुछ सिलेबस से बाहर, फिर भी आप उसको सॉल्व कर देंगे, नहीं कर पाएंगे क्या? अगर आपको पता है हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उस तरह का जितना डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा यू कैन सॉल्व इट. दिस इज मैथमेटिक्स. Mathematical physics में you have to solve. So when you will comfortable to solve the equation, you can solve an equation when you are well versed with the technique how to solve it. ठीक है? So just provide this PDF. मैं PDF आपको दे दूंगा जब खत्म हो जाएगा ये वाला कोर्स. ठीक है? Okay, sir. एनी डाउट? और आप बेसल कोशिश करो, फॉर्मेट कोशिश करो. मैंने आपको जो पावर सीरीज बताया है, क्योंकि Yes, sir. वहाँ शायद फ्रोबेनियस मेथड में होगा, ये पावर सीरीज में भी हो सकता है. यू कैन ट्राई टुडे एंड टुमारो वी शैल डिस्कस. ठीक है? हो रहा है या नहीं हो रहा Yes, है? sir. ठीक है? एग्जाम में तो ये चारों में से कोई एक आएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो Sir, आप do you अगर know चार आज exam सॉल्व कर pattern? दोगे, एग्जाम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दे मांग लो इग्नू से. Okay, sir. ठीक है? या फिर मुझे मिलता है तो मैं दे दूंगा. आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है वो Sir, आपको only 10 भेज mark and देंगे. 5 mark questions are there in the question. I have seen it. मैं पिछले साल का फॉर्मेट जो है वही फॉर्मेट रहेगा, ये कॉमन पैटर्न इन इग्नू. From the 8 ठीक है? question, I have to attend 5 questions. ठीक है, मैं आप पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिए, पता चल जाएगा. एंड यू कैन Okay, ट्राई sir. टुडे बेसल हर्माइट अदर थिंग्स एंड आई कैन ऑल्सो शो यू इन द फ्यूचर क्लासेस. एंड इफ मेनी ऑफ टुमारो यू व्हाट वी शैल डू, you try the first differential equation which is there in your syllabus. Okay? And you Okay, can sir. present by workout in your notebook. ठीक है? And other people will Yes, sir. also enjoy it. तो tomorrow 15 मिनट यही करेंगे, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा. पावर सीरीज में जितना आपका सिलेबस में है उसको कोशिश करो. अगर नहीं होता है तो आई शैल शो यू हाउ इट कुड बी डन. Any other question? No, sir. Now you will enjoy it when you will solve the equation which is new to you. You will enjoy that. Look how it is being solved very easily. Okay. So ठीक है. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.